नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे टैक्स सेविंग ऑप्शंस की और क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स की वजह से लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि किस में इन्वेस्ट करें और किस में नहीं। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द ओल्ड एंड द न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स एंड आपको उनमें से कौन सा चूज करना चाहिए। टैक्स प्लानिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। कैन यू कीप स्विचिंग बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू इनकम टैक्स regimes? To know all this, you'll have to keep watching the video till the end. Ideally, tax planning should be done in the month of April. But I know all of us wait till the last minute, जब तक हमारे employer या CA से final call नहीं आ जाती. This is the final boarding call for all taxpayers to submit their investment details. That's right. It's time to board the tax flight. But before that, don't forget to like this video and subscribe to my channel. This is also a very good investment for you. भाई पैसे बनाओगे तभी तो टैक्स पे करोगे ना. तो सबसे पहले ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर और न्यू टैक्स स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं. एज यू कैन सी, बजट 2020 में इंट्रोड्यूस किए गए न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा इनकम टैक्स स्लैब्स और लोअर टैक्स रेट्स हैं. बट देयर इज अ कैच. यू कांट क्लेम मोस्ट ऑफ द टैक्स डिडक्शंस अंडर द न्यू टैक्स रिजीम. फिर चाहे वो पीपीएफ हो या इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, एचआरए हो या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम. द ओनली एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस अवेलेबल आर कन्वेंस अलाउंस. अगर आपको अपने जॉब के लिए कुछ कन्वेंस का खर्चा करना पड़ा, अगर आप ऑफिशियल टूर पर हैं, आप अपने रेगुलर प्लेस ऑफ वर्क से काम नहीं कर रहे या आपका ट्रांसफर हुआ है, तो उसका खर्चा या ट्रैवल कॉस्ट या डेली अलाउंस whichever is applicable. ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन. अंडर द न्यू टैक्स रिजीम आप सेक्शन 80C के 1.5 लाख के डिडक्शंस तो नहीं ले सकते, जैसे कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री है. Similarly, interest and maturity amount received from PPF, Sukanya Samriddhi Yojana is also tax exempt. The interest received from EPF account is also tax free provided it does not exceed 9.5% per annum. Interest received on post office savings account up to a certain limit is also tax exempt. Besides this, leave encashment on retirement up to rupees 3 lakh, monetary benefit received at the time of voluntary retirement are all tax exempt too under the new tax regime. Employer's contribution to your EPF NPS account under section 80 CCD2 are tax exempt too, up to 10% of your basic salary and dearance allowance. In case of withdrawal from NPS on maturity or premature closure, up to 40% of the amount received on such withdrawal remains tax-free for all. In case of partial withdrawal from NPS, up to 25% of contributions made by individuals will be tax-free. Gratuity received from your employer. अगर आप किसी कंपनी में 5 years से ज्यादा काम करते हैं तो आप gratuity के लिए eligible हैं. For non-government employees, it is tax exempt up to rupees 20 lakh, and for government employees, all gratuity received is tax exempt. Education scholarships are also tax exempt. तो ये न्यू टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनकी इनकम 15 लाख रुपए से कम है और वो ज्यादा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, ज्यादा डिडक्शंस नहीं लेते. बट इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रिजीम एंड यू आर स्टिकिंग विद द ओल्ड एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम, देन आपके पास कई सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं. स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000 फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स. HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस डिपेंडिंग अपॉन योर सैलरी स्ट्रक्चर एंड रेंट पेड. अगर HRA नहीं मिला तो यू कैन डिडक्ट हाउस रेंट पेड, लेकिन इसके लिए आपकी किसी और जगह पर सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. फैमिली पेंशन पर रुपीज 15,000 का डिडक्शन. टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A. इसमें कई तरह के ऑप्शंस हैं. अंडर सेक्शन 80C you can claim a deduction of 1.5 lakh rupees by choosing from any of the following options. You can invest in Sukanya Samriddhi Yojana, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, 5-year टैक्स सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम्स. एनपीएस में आपको एडिशनल 50,000 का बेनिफिट मिल सकता है. दैट मीन्स यू कैन गेट अ बेनिफिट ऑफ अप टू 2 लाख रुपीज. इसके अलावा आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस का बेनिफिट भी मिल सकता है, विच इज मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, ELSS एंड टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स. यूजुअली इन सभी ऑप्शंस में काफी बड़ा लॉक इन पीरियड होता है. ELSS हैज द शॉर्टेस्ट इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ 3 years. वहीं 2 Feb 2021 से ओपन हुए यूलिप्स का ईयरली प्रीमियम रुपीज 2.5 लाख से ज्यादा होने पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. इसके अलावा पेमेंट्स मेड फॉर योर किड्स ट्यूशन फीस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और रीपेमेंट ऑफ होम लोन प्रिंसिपल ऑल्सो कम अंडर दिस सेक्शन. आप अपनी वाइफ या बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए लिए गए एजुकेशन लोन पर भी डिडक्शन ले सकते हैं. इट इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 8 years और टिल द एंटायर इंटरेस्ट इज रीपेड, whichever is earlier. इस अमाउंट पर कोई लिमिट नहीं है.
Saving accounts interest per rupees 10,000 deductions under section 80 TTA. And for senior citizens, it is up to rupees 50,000 under section 80 TTB. Self-occupied property या vacant property के home loan interest पर maximum 2 lakh का deduction under section 24. There is an additional deduction of rupees 50,000 available on your home loan interest on top of deduction of rupees 2 lakh for your first home. But the value of the property must be less than 50 lakh and the home loan must be less than 35 lakh rupees. LTC, LTA, entertainment allowance and professional tax deduction for government employees. You can claim a deduction of rupees 25,000 under section 80D for medical insurance for yourself, spouse and dependent children. If your parents are less than 60, then an additional deduction of insurance of parents is available up to rupees 25,000. And if they are above 60, the deduction amount is rupees 50,000. Treatment of self or dependent for specified disease or physical disability के लिए भी deduction available है. You can also avail deductions on donations and amount contributed to political parties. Now the question is, can you keep switching between the old and the new income tax regime? Well, it depends whether you have salaried income or non-salaried income. अगर आपके business head के अंदर भी income है, then you can't keep changing between the old and the new tax regime. लेकिन अगर आपकी business income नहीं है, then you can change it every year. Salary taxpayers को फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में बताना होगा अपनी कंपनी को कि which regime they want to choose, ताकि उनकी कंपनी उसी के हिसाब से TDS डिडक्ट करेगी. They can't change it in the middle of the year. अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो एंड में रिटर्न फाइल करने टाइम उसे वो चेंज कर सकते हैं. Hope all this information helps you with your tax planning and your investments. If you have any question, you can always ask me in the comment section. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. Until then, here's me Gunjan signing off. Bye bye, take care, keep calm and invest on.